Okay, so the title of the session is From Learning to Leading Climate Education and Advocacy, and our moderator is Maha Hussain. Over to you, Maha. Thank you so much. And thank you all for joining us for a very important session on climate education and advocacy. And as we all know, climate change is not a threat for the future. It is a very present threat. In Pakistan, just last year, we experienced unprecedented winter rainfall that impacted our wheat yield. We had the highest temperatures in the summer, so it was the hottest summer of all of our lives, and it's just going to get worse this year. Monsoon rainfall impacted infrastructure and led to flash flooding in Khyber Pakhtunkhwa, in Balochistan, in Sindh. And this year, the winter season was pushed so far back that it was hot until December, basically. So these changes and impacts of climate change, which are accelerated and also are experienced alongside other environmental issues like pollution, degrading water quality, and smog, all of these are very present realities. And in Pakistan, we're making a lot more effort to bring climate change into discourse. But when we talk about it, it's very limited to a political or a policy discourse. We're not yet talking about a really important figure and part of it, which is education. And within education, we need to be thinking about how well our education system is adapted to dealing with teaching climate change to our students. With a population of 2.6 million out-of-school children in Pakistan, how are we educating them about the climate crisis? And how are we making sure that life-saving information and the ability to adapt to climate change is being taught to those who are on the front lines? So our farmers, our community members who need to protect themselves in case of disaster. How are we making sure that our messages are reaching them as well? So we have a very incredible panel with us today to discuss all of these topics, and hopefully we'll answer some of those questions, and you can share your questions with us today as well. So I'd like to introduce our panelists. We'll start with Ms. Tabinda Jabin. She is a leading educationist with 20 plus years of experience in curriculum development and teacher training and designing and implementing public sector education projects. She leads training and development at the Teachers Resource Center, and she's played a critical role in developing the climate change education curriculum and Teachers Toolkit for climate change education. So that's this document that we'll talk about a lot more in the discussion. Then I'd like to introduce Ms. Afia Salam, who needs no introduction, but she is a seasoned journalist with 4 decades of experience in print, electronic, and online media. She's been a voice for environmental issues and advocates through her writing, through policy engagements, and engaging on panel discussions like this one. She's a member of the National Climate Change Council, and she's a member of the IUCN Commission on Education and Communication and the Commission on Economic and Social Policy. Thanks for being here. Next, I'll introduce Dr. Athar Osama, who is a science policymaker and founder of InnoVentures Global and the World Science Collaborative Limited. He's a former member of the Planning Commission for Science and Technology and ICT, and he's led initiatives on science education, STEM learning, and climate innovation. His recent work looks at AI innovation and its impact on education and health, so very topical to what we're going to talk about today. Next, I'll introduce Ms. Sayyida Reenam Fatma, who leads corporate partnerships and environmental education initiatives for WWF Pakistan across the South region. She has over a decade of experience in news, and she's advocated for building environmental awareness and urging corporations to adopt sustainable alternatives.
Last but not least, we have Mr. Danish Rashdi, who is head of IUCN for Sindh and Balochistan. He oversees conservation initiatives and in partnership with the government and with donor agencies. He has 20 years of experience in project development, project management, research strategy in conservation and development, and he's initiated a lot of projects that we'll hopefully talk about today. So, onto this topic of how do we deal with climate education and advocacy within Pakistan. And I want to start with formal education systems, because internationally there's been a real lack of including climate change within our formal curriculum. So, Ms. Taubinda, I want to ask you, how well have we incorporated climate change within our curriculum in Pakistan? And what are the main barriers that we face that have prevented that? थैंक यू सो मच माहा. सो एज़ यू सेड कि हम अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारा फुटप्रिंट इतना ज़्यादा नहीं है, बट वी आर एट द रिसीविंग एंड, और हम 5 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से हैं. जिस तरह आपने कहा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज एजुकेशन इनटू आवर करिकुला, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक, दो देयर आर क्रॉस कटिंग थीम्स वी कैन फाइंड इनटू आवर डिफरेंट करिकुला, बट एज अ क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा उन पर फोकस नहीं है. TRC has been around for last 38 years, and we have the legacy of curriculum development. Back in 2002, TRC has developed Pakistan's first curriculum on early childhood education. So, taking this legacy forward, now TRC has developed this in Pakistan's introductory curriculum on climate change education, and this curriculum is for grade 1 to 10. As most of us know that after 18 amendments in 2012, जो अब education is the provincial matter, and each curriculum is responsible for developing curriculums at their end. So what did we do? We have developed this curriculum. It is our own brainchild. इस पे हमने बहुत काम किया. We have developed a technical committee of the expert, because we are educationists, and honestly we are not climate change experts. So we have developed a committee of different climate change experts to guide us on how to develop and what to incorporate in that curriculum. And then we have developed this curriculum. As I mentioned, now we have to get buy-in from the provinces and federal ministries. So what did we do? We have just had a very thorough, very rigorous consultative process across Pakistan. हमने सारे प्रोविंसेस को रीजन, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फेडरल एंड ऑल 4 प्रोविंसेस, वी हैव सेंड द ड्राफ्ट ऑफ दिस करिकुलम. उनको 4 to 5 वीक्स पहले हम उन्हें भेज देते थे, अलॉन्ग विद सम गाइडलाइंस टू रिव्यू दैट, एंड वी रिक्वेस्टेड देम कि आप इंडिपेंडेंट कमिटीज़ फॉर्म करें, जो वो उन कमिटीज़ में आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी रखें, अपने क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट आपके कॉन्टेक्स्ट में जो मौजूद है, इसके साथ साथ आप टीचर एजुकेशन के लोगों को भी इन्वॉल्व करें, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को भी इन्वॉल्व करें, एंड ऑल्सो इन्वाइट टीचर्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ. So the provinces, and we approach right from the minister and secretary and the Bureau of Curriculums in all provinces. So they have formed these committees and they reviewed thoroughly this curriculum, and when we visited them, we had a workshop, sort of a long session with them, and they give us the feedback on this curriculum. We requested them कि प्लीज़ आप अपने लोकल, अपने कंटेक्चुअल क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को देखिए, और ये देखिए कि कहाँ तक वो इस करिकुलम में इनकॉर्पोरेट हुए हैं और कहाँ गुंजाइश है इसको मज़ीद बेहतर करने की. एंड आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस फीडबैक, TRC ने वो सारा फीडबैक इनकॉर्पोरेट किया, एंड वी फॉर्मली लॉन्च दिस करिकुलम ऑन 30th September in Islamabad. And after that, unfortunately, 30th September was the last day of the grant, जिसके तहत हम ये कर रहे थे. Now we are doing advocacy across Pakistan. There are lots of will to incorporate it, like AJK, they are very progressive in all manners, so they are very willing, they have already started working on it. उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक में incorporate किया है, and they requested us to conduct teacher training for that. Let me add one more thing here. So जैसे माहा ने बात की, हमारा जो एजुकेशन सिनेरियो है, वो हम सबको आइडिया है कि मास लेवल पे हमारा एजुकेशन की क्वालिटी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है. सो हमारी जो टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. हमारे जो मास स्कूल सिस्टम्स हैं, दे लैक रिसोर्सेज एज वेल. जो एक लास्ट उनके पास एक बेयर मिनिमम होता है, वो एक टेक्स्ट बुक होती है एक गवर्नमेंट टीचर के पास. सो व्हाट डिड वी डू? वी डेवलप दिस टीचर्स टूल किट. सो वी डेवलप दिस set of 3 booklets
जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 10 के लेसन प्लान है, इसमें 150 लेसन प्लान है जो कि ईजी टू इम्प्लीमेंट है। और जब हम ये करिकुलम वहाँ रिव्यू कर रहे थे ना, वी कम अक्रॉस के देयर आर 5 मेन थीम्स इस करिकुलम में। सम ऑफ द कंटेंट इज़ ऑलरेडी देयर इन डिफरेंट करिकुलास। अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्लियर करूँगी, इट्स नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। और इसकी जो थीम्स है क्रॉस कटिंग है अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो हर सब्जेक्ट में इसकी थीम्स कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, बट स्टिल देर आर द डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे एनवायरमेंटल जस्टिस इज देयर, इक्विटी इज देयर, दैट आर मिसिंग। सो प्रोविंसेस ने भी हमें सजेशन दी कि आप उन थीम्स को वो अपनी टेक्स्ट बुक में, अपने प्रोविंशियल करिकुलास में इनकॉर्पोरेट करेंगे। So these lesson plans are for the teachers' support. We have incorporated easy to implement activities. Lots of pictures are there, lots of handouts are there, and teacher guide is also there in it. So now we are advocating across Pakistan to conduct online trainings so that हमारी जो teachers हैं उनको climate literacy और climate pedagogy के हवाले से train किया जा सके। Honestly speaking, हमारी teachers are not ready to implement that. उन्हें भी आगाही और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इन द मॉर्निंग द सेशन वेयर मिस शहरी रहमान मेंशन के ओनली 26% बच्चे जो है अक्रॉस पाकिस्तान दे आर अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज़, या वो टर्म्स के साथ अवेयर है, बट 74% जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो इट्स द हाई टाइम, डायर नीड है कि हम वो अवेयरनेस रेज करें। आपको पता है कि वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, हमारे पास मोर देन 60% यूथ है हमारे पास, ठीक है ना। और वी वांट कि ये जो अवेयरनेस है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, दैट्स द राइट टाइम, फॉर्मेटिव ईयर, कि हमें ये अवेयरनेस इनकलकेट करने की ज़रूरत है। वो बच्चे जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक ये करिकुलम पढ़ते हुए आगे जाएंगे, तो वी होप कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, कॉन्शियस, कॉग्निजेंट, सोच समझने वाले जो हैं वो सिटीज़न बनेंगे। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंसेस। थैंक यू सो मच। Yeah, it is an incredible initiative, and I think we can all relate when we hear the challenges that you face in terms of the devolvement of this to the provinces, and how you have to go to all of these different departments to ensure that they take it up as well. So you definitely need the institutions themselves to recognize the importance of having a climate change curriculum. And I think one thing that really stood out to me is how only 24% of children are aware of climate change and can explain it in technical terms. So, Dr. Osama, I want to come to you and ask, I think if we think back to our educations, the max that we were taught about climate change was the greenhouse effect. And I think science since then has developed quite a bit, and we have a lot more understanding of the technical changes that are taking place today. But it is a technical topic, and sometimes it might be difficult for students at different levels to truly grasp it. So what can we do to make that technical concept more understandable, more accessible across different levels in school? Okay, so I think the science of climate change is very well established, and it's also very accessible. Obviously हमारे curriculum में अभी उस तरह से integrate नहीं हुई है, लेकिन science is very well established and it's very accessible, and we almost know that as a world we are moving in the opposite direction right now, right? We are not yet, anywhere near sort of arresting the problem of climate change, and I think students, young people and students need more engagement, more awareness, more experiential learning with climate change. So I will try to answer this question in two frame of reference. One is a program that we run with high school students, which we've been doing for the last 8 years, in which we actually give students opportunities to experientially learn science and STEM at a very high level. A lot of climate change solutions are either at the behavioral level, which is sort of covered in social sciences, or at the technical level, which is covered in technology. तो ये दोनों ही चीज़ें साथ लेके चलने की ज़रूरत है। हम एक प्रोग्राम करते हैं पिछले 8 साल से, where we pick 40 of the brightest students, high school students from all across Pakistan, and we take them to Pakistan's leading universities, and we get them to experience science as it happens in the real world, right? So they actually work with university professors trying to solve real science problems that university professors deal with all the time.
And it's a very interesting program. It is a very high experiential program. A lot of students come to that program, and at the end of the day they develop totally different ideas about what they want to be in life. Almost half of the students every time come to me and tell me कि जब हम इधर आए थे तो हमें पता था कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं पता. You've opened our minds to things and possibilities. We've had students who came to the program, fell in love with astronomy and now have become astronomers. They've gone out of the country obviously. तो आई थिंक इस किस्म की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में अगर हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली इंटीग्रेट करें तो वी कैन डेवलप विद एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स. अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी स्केलेबल मॉडल, वी अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स के साथ हम बड़ी हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट डेवलप कर सकते हैं. दे कुड एक्चुअली गो एंड make breakthroughs in climate change, scientific breakthroughs in climate change. There's a whole movement around the world called citizen science, where young people from all around the world collaborate with each other, solve climate. Mostly they are in climate and biodiversity के initiatives होते हैं ज़्यादातर. They sort of work together and collect data in a collaborative fashion and then share that data and work on those problems. So I think अगर हम बच्चों की इस किस्म की engagement younger age से create करें तो that would make a huge difference in how, at least at the higher level of this, right? I remember I'm a product of the Rio summit, right? I remember first time as a young person I won an essay competition on climate change and went abroad to represent Pakistan, and since then obviously there's a soft corner that I have for climate change. तो I think इस उम्र में बच्चों को इस तरह से कैप्चर करना और उनको उस डायरेक्शन में इंटरेस्ट करना, एक्सपीरियंस करना is I think really important. The other area which I have worked on in the last 5 years is with teacher training as well, right? So we run a program called Holistic Science Teaching, which is a program that we are piloting in 6th to 8th grade science teachers, where we are training science teachers to teach science in a way that it is connected with other branches of knowledge such as history, philosophy, ethics and religion in a proper way, right? So we actually बच्चे क्लास में किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं और नॉर्मली उनके सवाल साइंटिफिक नहीं होते, even in a science class, and science teachers are unfortunately not trained to answer those questions, right? So our pedagogy is called What Kind of Question Is This?, where we train the teachers to first detect what kind of question is being asked of them and then try to answer it properly. So sometimes the science teacher is the best person to answer the question, sometimes they are not the best person to answer the questions or refer the question to the right type of expert. तो हमने पिछले 5 साल में कोई 250 teachers train किए हैं in 3 countries around the world, and we are testing this pedagogy and we are still collecting a lot of data, and now we are beginning to scale some of this pedagogy as well. But in this context as well, questions of ethics for example arise in the classroom. Ethics normally आप energy की बात कर रहे हैं, आप material usage की बात कर रहे हैं, आप plastics की बात कर रहे हैं, हर issue में ethics की जब बात होती है तो फ़ौरन से climate change सबसे पहले सामने आता है. And again, teachers need to not just be able to answer those kinds of questions, but also encourage class में debate amongst those types of questions. We have a teacher who teaches here in Malir in a public school focused on very underprivileged girls. तो जब उसने हमारे से ट्रेनिंग ली और उसके बाद उसने क्लास में जाके होलिस्टिक टीचिंग पढ़ानी शुरू की तो she sort of wrote back to me and said कि when I started teaching holistically, I realized that maybe I'm part of a revolution that will not have an impact today but in 25 years. So she was actually teaching energy and water usage, right? किसी तरह से water cycle से बात water usage पे आ गई. And then she said कि those girls who were very precarious and underprivileged and all that, they started talking very animatedly about water rights and who has the responsibility and who has the authority to use this and that. तो she said कि मुझे लगा कि ये मेरी science class में क्या शुरू हो गया, right? But I think some of this is very important. I think kids need to be made aware of how our lives and our lifestyles affect our planet, each other, और वो conversations जब तक
साइंस क्लास में वो होनी इसलिए ज़रूरी है कि जब वो साइंस क्लास में होती हैं तो उनका एक फैक्चुअल बेसिस होता है, राइट? अगर सोशल साइंस में एक और तरह से आप उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, लेकिन साइंस में उसको आप एक फैक्चुअल बेसिस से स्टार्ट करते हैं. तो आई थिंक इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू develop our education systems in a way that they encourage and entertain these kinds of conversations in the classroom, right? And that whole conversation is kind of built from science and then moves away. So we also encourage our teachers to ask what we call big questions in the classroom, and these big questions are usually questions that start from science but go into other branches of knowledge. Now, teacher is not always trained to answer those kinds of questions, but at least she can ask those kinds of questions and leave it in the minds of the students to maybe someday grow up and try to answer those questions for themselves. हमारे मुल्क में टीचर्स के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि so I've interviewed over 1,000 teachers over the last 5 years, and I always ask them the question, what do you read in your spare time? And 95% of the teachers tell me they don't read anything, except in the morning they would read the lesson plan that they have to deliver that day. 5% of the teachers tell me that they read afsanas and novels and digests. तो हमारे मुल्क में लिटरली रीडिंग का फुकदान है, और मुझे नहीं पता कि हम बग़ैर रीडिंग किए साइंस टीचर कैसे बन सकते हैं और कैसे रह सकते हैं. The speed with which science is changing these days and the speed with which new developments are happening, technology but also climate and all other things, it's very hard for somebody who did her bachelor's 15 years ago. I mean, the whole science has almost changed in the last 15-20 years. So I think it's really important for us, for our teachers and for our society at large to actually develop a habit of reading. उसके बगैर ये मसले हल नहीं होंगे. We have a serious deficit of reading and knowledge and appreciation in our society. And I think that points to a very big issue that hopefully, Ms. Afia, you can give us a little more insight into about outside our classrooms, what are we reading, what kinds of topics are we being exposed to? And of course, with your experience in media and storytelling, what role do you think that can play in climate change literacy, in, I guess, humanizing it? Because all Pakistanis are aware of the impact that climate change has on them, but in connecting that with the technical side of climate change, they might not have that language. So what role does the media and the storytelling that you do play in that? So thank you very much, because this is a very important topic, and having been in journalism and then also as part of the development sector, so I see these intersecting roles, and I think Tabinda has also spoken about it in the morning session. You heard both Amrina and Senator Sherry speak about it. It's not that all Pakistanis know. No, Pakistanis do not know the impacts. Also, Pakistanis, we must remember, if you're talking in the realm of literacy, in the formal sense of the word, how many Pakistanis are literate? Here, Dr. Osama is talking about teachers not reading. So that canvas doesn't broaden. They are also delivering a job description, basically. So climate change is something much wider, and we cannot always throw the science at the people who are being impacted by it. Because I work with the communities as well. So as I mentioned, I see it more with the lens of communications. I will not say journalism, I will not say only education. There are several things that you have to combine when you're communicating climate change. And it's about, there are different ways of doing it now. We are still rooted in the traditional way of books. Even, so my beef with the development sector is that you have this project, जी वो communities के साथ काम करते हैं, तो इसका ये project है, इसके leaflet छपवा लें, बोले, for whom are you printing the leaflets if you are going to educate the community about the impending threats? So then we have to use all the tools, the communication tools, the visual tools. Maybe, graphics will tell that story instead of words. And we have done that, and those have met with far greater success, and not everybody, I'll tell you, we are sitting in a coastal city,
And across Pakistan, the coastal community, unfortunately, is one of the most impoverished. Whereas elsewhere in the world, the coast is the rich live along the coast and thrive. And when you go to those coastal communities, supposing you want to give them, education, not just this education, but information about the threats they face from sea level rise or from tsunami that can hit them, or even storm surges, which have displaced our population many times over. How do you educate them? You can't give them leaflets. There's no place for them to keep anything. They keep their most precious things up wrapped in plastic and somewhere up on their small thatch huts. So we have to be real. We have to be realistic on how we are communicating. So that's where the role of media, communicators, and all kinds. I know we lament the death of reading. There was a session there about, from books to, e-books. It's even beyond e-books. And we say the attention span has shortened. Yes, that's a reality we have to deal with. And that's a reality we have to work with. It's not just dealing with it and realizing that people, now the attention span, how much is it? 8 seconds? In 8 seconds, if whatever is opening in front of your face on the device you're holding doesn't capture your interest, you move on. So that means we need skill development on communicating to people the kind of content that grasps their attention, that delivers to them that very, very focused information, whether it is through a song, whether it is through a skit, whether it is through animation, cartoons, because that's how the world is moving forward. The written word is very important, but then, it's like the horses for courses. Yes, you're sitting at the policy table, you're not going to play an animation. You need that data, you need the visual, and again, the data is also playing out in different ways. People want visualization of data now. They don't want to go through, reams and reams of pages. And people who need to understand that data or who that data is targeted towards also need, they have different preferences now. So I'll give the example of COVID. I was given a research report on COVID's effect on journalism and how journalism changed during COVID and how organizations like WHO actually signed MOUs with Snapchat, with TikTok, because we are so dismissive, but they are a medium which is reaching the audience which needs to know what's going on in the world and what they need to deal with. So we think it's entertainment, it's everything. And there is an audience for entertainment, there's an audience for the kind of content you don't like. That's okay, you don't like it, don't watch it. But don't dismiss the entire, the potential of that medium to reach the kind of audience which needs to know what's going on, what is there in the future, how they need to deal with it. And there are countries who are doing it. Right across the border, the kind of content that is being prepared. Even other places, South America, वहाँ से जो content आता है, छोटे-छोटे skits हैं, गाने हैं, जिस जगह पे जिस चीज़ की रिसेप्शन है, कई लोगों के म्यूज़िक और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है उनके कल्चर्स में, सो उसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करते हैं. कहीं जगहों पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा ज़ोर है तो वो रिलीजियस उससे टीचिंग्स के ज़रिए करते हैं. गेम्स are playing a very, very big role in communicating climate change. Actual serious games, research-based games through which, solutions are being provided. So, मेरे ख्याल में वो जो जितने भी solutions आपके वो plate के ऊपर हैं, उन सब की एक audience है. हमें content creators चाहिए उस audience के लिए जो कि अपने उस audience तक reach करें और उनको ये बताएं, क्योंकि ये future की चीज़ नहीं है कि ये future में climate change पे ये हो जाएगा. That future is here right now and we have felt the impacts. So this is an important tool for the understanding on what needs to be communicated. आपके ये जो जब आपके पास में आई थी मैं कहा था कि आपने इतनी मेहनत की है, but मुझे मालूम है कि जो written word है वो लिखते साथ ही it becomes redundant because of the online medium now. But that does not take away anything from the research that has gone into it and from the guidance that you can draw from it कि वो टिकटॉकर ने भी अगर कुछ communications के लिए बनाना है, उनको पता है कि ये वाला topic है, गिलगित बल्तिस्तान में आपने जाके मैंग्रोव्स की बात नहीं करनी है.
ठीक है ना, ये वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज़ नहीं है. पाकिस्तान इज़ जोग्राफिकली लार्ज, इट्स वेरी डाइवर्स, डेमोग्राफिकली इट इज़ वेरी वेरी डाइवर्स. बहुत लोग हैं और बहुत से तबकात हैं, बहुत से मुख्तलिफ उनकी प्रॉब्लम्स हैं. तो उन तमाम तबकात को एड्रेस करने के लिए दिस काइंड ऑफ करिकुलम विल गिव यू दैट गाइडलाइन. और मैं समझती हूँ कि ये इन्होंने, बिकॉज दे आर अ टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव डन दिस. I'm sure Danish and Raymond will also touch on it, because both there are organization and there are other organizations. So I usually say कि मैं बेरोज़गार हूँ, but मैं बेकार नहीं हूँ. So working as a freelancer, I am privileged to have worked with different organizations who, in the absence of a formal curriculum as part of the regular curriculum, and I am only talking right now of government schools, because that is what matters. पब्लिक सेक्टर स्कूल्स आर व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन. बाकी सारे स्कूलों के पास बहुत कुछ है और ज़्यादातर उन स्कूलों के बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो पाकिस्तान को उनका फ़ायदा कम होता है. सो आई मीन वी नीड टू फोकस ऑन द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज विच आर ओनली एबल टू एक्सेस पब्लिक सेक्टर एजुकेशन. उन पे फोकस करें, उनकी ज़रूरियात समझें, उनके लिए इसी में से आप वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के उनको एड्रेस करें. दैट इज़ व्हाट आई वुड अर्ज. And I definitely think you're right that we need to understand the group of people that we're seeking to cater for. So, Ms. Reenam, I want to ask you about WWF's programs. A lot of them work with teachers, and then a lot of them work directly with students. How do you understand what they need, and then how do you cater to them through that? Okay, thank you so much, Maha. And as all our panelists mentioned, that when it comes to education, most of the teachers are unaware, unfortunately. Teachers are bound to follow I think it's a very systematic thing that teachers are also subjected to, they are bound to follow whatever it is written in the books. I have came across such incidents where the teacher was questioned that why did you teach something which was not the part of the curriculum. Can you imagine? So teachers are also unfortunately not at the full privilege, and WWF since 1970 its presence in Pakistan, and education is one of the very core value of WWF, because we believe without awareness we can never have the full impact of whatever effort we're putting in the saving of environment. So WWF team, we do the TOTs, and team travels across the country to go to the underprivileged areas, to the schools, especially in the north region, where the teachers they are very eager to learn about the climate impacts and what we should teach the students, but unfortunately they themselves are not aware. So this is where the WWF comes in, and if any sort of school approaches us, what we do, we go to them, we train them for 2 to 3 days, and then they are the master trainers who can in fact teach train other teachers as well and the students as well. So one thing which was discussed earlier about the climate thing being a part of the curriculum, we are on board with that. We are completely agree. In fact, we are working with TCA, Green Crescent, and the Dawood Foundation, where we are actually developing a curriculum where in every subject the aspect of environment should be inculcated. For example, if it's Urdu, there should be a chapter where trashing should be addressed, that why and how it impacts. If it's Islamiyat, it should be imparted to the students how the Prophet was very concerned about climate and how they, throughout their life address those issues. So, but when it comes to WWF environmental education, we believe we're at the point where a book comes in, it shouldn't be one subject, it shouldn't be one book. It should be integrated in all subjects. And why don't we have a book of ours is because we believe where the book comes in, the student gets terrified. Oh my God, it's a book. Now I have to read it, and then there will be a quiz, and then I will be marked, and then my parents are gonna scold me, the marks are low. So what our approach is, we always try our best. We play with them. It's more like an awareness session. It's more like a healthy competition. Yeah, for example, one of our very successful campaigns recently was the Tetra Pak was collaborating with us, and we told the students that you go home
collect all the Tetra Pak boxes, because inside the Tetra Pak box there's a lamination of plastic, so it cannot be recycled, biodegradable. It's not biodegradable. So what we did, we challenged all these students that whoever collects most Tetra Pak boxes, like it can be a juice box, it can be a milk carton, it can be any sort of liquid container box. So we will wait, and then there will be like levels of competition. For example, in this class, this person collected the most box. In this whole school, this person collected the most box. And in all of schools, there was like a country level competition, and it was actually very healthy. And after collecting all those boxes, we showed the students that these are the things that were made from the collection of your boxes. For example, the park benches, for example, the bird feeders, for example, the other areas like with the plastic and everything used, the benches in the parks, the seesaws in the parks, stuff like that, which they basically enjoyed. So they were very amazed that, oh my God, just because I collected these boxes, they owned that. That, okay, this is my bench. I created that. They took part of it. So what we believe that instead of making it a subject, instead of making it, what should I say, that a competition or something like that, we play with the child and we make him the owner, that you are responsible for this. You are going to make an impact, and the child feels very empowered. In fact, one thing unfortunately which is I don't know if that is in our nation or just in teachers, that we feel that if right now I'm sitting here, I am entitled to know all the answers. Teachers think that they are entitled to know everything. In Pakistan, there is no culture of saying, oh, this is new to me, I'm sorry, I will get back to you. Nobody says that. I haven't heard any person in my life say that. They try to just, pick things from here and there and make up an answer and just throw it to the person who's asking. There is no harm in saying, I'm sorry, this is very new to me. I like your question, I will get back to you. So what we teach the teachers when we are teacher training, what we teach to the student, that it's okay to not know. You should always, if you think something, I don't know about it, you should go, you should research, keep learning. In fact, we ourselves as WWF, we are always learning. We are always, in fact, the students inspire us. One of our very famous campaign, not exactly a campaign, but a whole program, Eco Internship, where the students from schools, colleges, universities, my team member is sitting here, he runs the whole Eco Internship program, and the students come up with ideas that you will be shocked that, oh wow, I never thought it could be that easy and that much effective. Like we adults, see, there's a time of learning and being innovative. I think after 35 to 40, it starts to diminish. You cannot be as innovative as a child is. So these students come up with things that like we have never even thought. Even we never knew that the tailors market in Sadr, what is the footprint of these tailors. And it was very thought-provoking when the child came up and said that, did you know every day there is more than 60 kgs of the fabric that is left from the cuttings of the clothes and coats and sherwanis and whatsoever. All of this ends up in landfills. Nobody is looking after that. No company is purchasing that to recycle. It's going in the landfills directly. So we were also amazed, and then after they did a project on that how this student collected some of those pieces and actually made a diary out of fabric. So these things, I think education, this is where the education is really playing its parts. Maybe not right now. We are not saying that okay, so many initiatives are going on, but where is the impact? Where is the result? But in a few years, I am personally very hopeful that all these children are going to make massive changes in the whole regime of climate change. And just like Afia said, public school is the right place where we need to work on. But
This is where the corporate question you asked me earlier comes in, that when it comes to public schools, government schools, we need financial partners. Because even if my team is traveling, going and doing all the effort, there is a cost included. The tickets, the stay, anything, or the papers, the books, whatever. So we need the corporates in that sector. One thing I would appreciate about the corporates of Pakistan, especially in Karachi, their mindset and their preference has shifted. Because earlier they were like, why don't you just have a festival at Falana school? Why don't you just go to the college and have a festival like, fun gala and do our marketing? But now they are, like as we tell them, they're shifting to more sustainable, more thought-provoking marketing strategies. For example, I just mentioned Tetra, one of our biggest partners. No, they are funding to do such sort of initiatives, such sort of competitions where there is impact. There is in fact impact. No partners are now asking that just go there and do our marketing. No partner is saying just go stand up in the mall and say that these are our sponsors. No, do something. We are ready to fund you. So this is what I would appreciate about the corporates. I definitely think it's important to be bringing those partnerships and also involving stakeholders who we need in this area. We have a lot of funding gaps, and all of the programs that I'm sure you all want to implement, you don't have the funding to do that. So it's really important to connect with people who can then provide that to you. And I want to move over to a different stakeholder, which is the local communities that you work with, Mr. Danish. In your conservation efforts and the programs that are implemented, what level of knowledge do local communities have? And then also, what are we learning from local communities and their traditional knowledge of the environment? थैंक यू. देखिए, मैं आपको एक शुरू से वाक़या बताता हूँ. जब मैं बचपन में गाँव जाता था अपने सिंध में, तो हम छोटे थे ज़ाहिर थे, उस वक्त हम हंटिंग भी करते थे. एंड आई नेवर न्यू आई विल बी इन द वर्ल्ड ऑफ कंजर्वेशन एट सम पॉइंट. और उस वक्त शदीद गर्मी में जब आपको ठंडा पानी चाहिए होता था, तो वो बर्फ़ आती थी मार्केट से, जो कि कम से कम लाड़काना से आप समझ लें, और वो आके गर्म मिट्टी में दफन कर दी जाती थी. एंड दैट वुड सस्टेन अ गुड 4-5 आवर्स फ्रेंकली, और इससे वो पूरा दिन चल जाता था. कम्युनिटीज़ के अपने जिरगे होते हैं, अपने शाम को आके बैठते हैं लोग, एंड दे हैव अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन दैट दे शेयर विद ईच अदर. दिन में क्या हुआ, क्या चीज़ें हो रही हैं, सब आके एक जिरगा सा लगता है और सब डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में. एंड दैट वाज वेरी यूनिक टू मी, क्योंकि हम शहर से जब जाते हैं तो हम लड़कपन में तो दोस्तों यारों से घूमते फिरते थे, लेकिन जो कम्युनिटीज़ और गांव वाले होते हैं ना, इन लोगों का एक बड़ी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है टू शेयर नॉलेज विद ईच अदर, शेयर ऑब्जर्वेशंस, जो भी इंसाइट्स हैं, और उसमें रिडल्स भी होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एंगेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं. हम दूर से समझते हैं लोग बहुत ही सादा तो लोग हैं ये बेशक, लेकिन इनके पास कुछ और करने को नहीं, बट दे हैव देयर ओन वर्ल्ड. अब आप ये सोचें कि अब हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, इन्वायरमेंट की, और ये कम्युनिटीज़ आर द वर्स्ट टू बी अफेक्टेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज. लेकिन पहले कैसे ये लोग हैंडल करते हैं ये सब? हर कम्युनिटी में इट्स अ ब्लेसिंग कि कोई ना कोई वाइज लोग होते हैं उनमें, उनके पास, एंड दे आर द वंस हु एक्चुअली आर वेरी ऑब्जर्वेंट, एंड दे गेट क्यूज फ्रॉम नेचर एंड द एनवायरनमेंट अराउंड देम as to what is likely to happen. These cues over time are accumulated, and they know अगर ये हवा इधर से चल रही है या ये बादल इस तरफ फॉर्मेशन हो गई है तो क्या होने वाला है और उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है. यहाँ तक their knowledge has been very very useful in terms of driving the adaptation, if we may say so. Climate change तो अब आया हुआ है ना, but in the past also they would at least stay prepared अगर कोई ऐसी anomaly होने वाली है तो. So communities have their own traditional knowledge, and but एक point आ जाता है जब आपने 2010-11 के floods देखे, 2022 की heavy rain सिंध में देखी, एक point पे they are completely helpless because they don't know what else to do. And that is where the government comes in, because at some point they need the administrative support from the top, a support to counter the impacts of certain occurrences जो होते हैं जिसको वो खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं.
So in terms of their knowledge, their understanding, they are quite aware of it. What we are trying to introduce is the word climate change into, and trying to do so in many ways that have just been described. But I would say climate change se pehle, we environmentally are a mess. Frankly speaking, climate change की हम बातें as a buzzword अब हो गया है आजकल. But अगर आप बाहर किसी मुल्क जाएं, किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं आपको ये अंदाज़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज एग्रवेट्स द करंट सिचुएशन. हमारे यहाँ तो इन्वायरमेंट को उस तरह लिया ही नहीं जा रहा. देयर इज़ अ वेरी टाइनी पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज़ माइंडफुल, कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि इन्वायरमेंट को हमें दुरुस्त करना है. वी हैव टू, environment is our own responsibility, and we need to act as proper good citizens to keep our environment clean. Many a time environment has been interchanged with the word climate change. Climate change is only exacerbating the issues. So communities wise they have a lot of knowledge. जब हमारी teams भी different projects में उनके साथ काम करते हैं, we go visit them, we involve them because communities are an integral part of whatever projects we do, especially on the coast when you're talking about Sindh, Balochistan. We're also working in Thar. So mangrove restoration we take them on board so that their ownership is created. But then you are also handling issues like अगर आप उनसे कहते हैं mangroves नहीं काटना, but then their reliance on fuel wood is also on mangroves. So that's the part we need to address. If you're not providing them any gas supply and then you ask them not to even cut mangroves, that's where this will not actually trickle down the way you want it to trickle down to them and expect them not to actually do so. इसी तरह हम थर पार्कर में जब हम काम कर रहे होते कम्युनिटीज़ में तो we did vulture conservation. A lot of you would know that there has been a very steep decline in vulture population over the last 2 decades. And Thar Parker has been one of the hotspots that we identified in one of our very comprehensive baselines we conducted across Sindh. Usme Kirthar range and then Thar Parker were hotspots. So there, I would say surprisingly, communities in that region are very, very environmentally responsible. We did not expect the kind of positive response we got from them. And once they were, sensitized to the issues arising from the use of certain chemicals that were killing vultures, they themselves were very cognizant of it कि ये जो livestock की vaccination होती है उसमें भी वो responsible drugs use करें which are not harmful to the vultures. Then we identified trees with them, with their support, trees where they had vulture nests. Even today they are protecting those trees without us actually policing them कि आपने ये करना है, because they have understood why they need to conserve vultures. So community के knowledge की जो बात है, they are full of knowledge, they have it. But again, the kind of information we need to send across to them through the medium that has been discussed here, that is essentially important. But again, पढ़ता कोई नहीं है, but you have to show them through storytelling, through videos, documentaries, things. You need to first sit in their shoes and understand ये कैसे grasp करेंगे. ये आपकी तरह पढ़ेंगे नहीं, but you need to tell them कि why saving or protecting certain things will actually be beneficial for them. Mangroves की मिसाल ले लें, आज भी हमारी जो communities हैं, they admitted कि साईं हम पहले काटते थे मैंग्रोव, लेकिन now we realize कि इनको रिस्टोर करने में हमारी फिशरीज इम्प्रूव हो रही है. साइंस तो ये कहती है, बट दे देमसेल्फ हैव एक्चुअली दे आर लिविंग प्रूफ टू दैट. देन द फर्स्ट थिंग, मैं छिपकलियों से बड़ा डरता हूँ. मेरे किचन में जब छिपकलियाँ आती थी, ज़्यादातर मर्द डलते हैं बाय द वे, ये मैं बता दूँ आप लोगों को. किचन में हमारी, और मैं अपनी बेगम यहाँ बैठी हुई इनसे ही कहता था कि तुम ज़रा इसका हिसाब करो कुछ. बट ओवर टाइम व्हेन देयर इज़ अ लिजर्ड इन माय किचन, I don't mind it at all. I mean, frankly, because when there is a lizard at certain 2 or 3 a.m. in the morning roaming around the kitchen, I would find no cockroaches ever in the kitchen. So you see, this is what I've understood. Every species playing its part, and communities cannot be detached from whatever we are doing. It has to actually reach them in ways they would really understand. Thank you. And I think those examples are really helpful in making us understand how
education, communication, awareness cannot be top down. It is both a bottom up and a top down. Every stakeholder that you go to will teach you something and you'll teach them something as well. So there needs to be more, we need to be more open to learning from all of these stakeholders. And now we want to learn from all of you. So we've spoken quite a bit, but if you have any questions or comments that you want to share, I know there are already a lot, so let's get to the Q&A. If we can pass the mic around, please. Assalamu alaikum everyone. This is Ali Shamroz here, and quite an impressive panel. So my question is from Dr. Afia. As you mentioned that there is a lot of diversity in the psychographics, demographics, and of course the geographics as well all over the globe, specifically with respect to Pakistan as well. So you mentioned a term that was very impressive about content creation. Okay, so raising awareness and educating by the use of music, let's say, religion or games as well. So just wanted to have your opinion, your feedback, because we work with local communities. So like just wanted to have your opinion that if we just try to inculcate these things in terms of local communities, so what challenges do you think we can face if we talk about the underprivileged societies or promoting education in those areas where awareness is lacking? First of all, thank you for the honorary doctorate. I'm not Dr. Afia. I don't want the real doctor sitting in the audience to feel offended by being conferred that degree. I'm just Afia Salam. Okay? Thank you. The content creation is key. Like this, I said, you take the guidelines from here and you bring the content, but then there is another element. That the bottom-up approach is, what does that community want? I'll give you two things, and in Pakistan it's easier to reach all demographics, as I had mentioned earlier, you know, all those segments, because Pakistan has one of the highest teledensities, and that is something that the arbab-e-ikhtiyar need to understand, that this is a development imperative to allow those channels to be used by people for development, for learning, for education, and not get into that knee-jerk, हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, so let's just pull the plug. Because you're pulling the plug on access to education and to information from the people who need it most and who cannot access anything else. जिसको पढ़ना नहीं आता, वो फ़ोन सुन लेता है. अब वो वॉइस नोट्स भेज के सवाल जवाब कर लेता है. आपके जब तक ये व्हाट्सएप का इतना यूसेज नहीं था, हर जगह जहाँ नहीं भी होता, तो उससे पहले आपके एसएमएस के ज़रिए लोग अपने वोट मांगने के लिए एसएमएस इस्तेमाल कर सकते हैं. लोगों को मैसेजिंग के लिए क्या नहीं किया जा सकता? आपकी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जब आप मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया से मांग रहे हैं कि हमें ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे, येस वी नीड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इमीडिएट लेवल पे आप अर्ली वार्निंग मैसेजेस तो भेज सकते हैं ना उनको, वॉइस मैसेजेस जा सकते हैं, एसएमएस जा सकते हैं, तो इट्स ऑल डूएबल. यू नो, मेनी पीपल से कि इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, डोंट यू लूज होप. आई विल लूज होप व्हेन एवरीथिंग हैज़ बीन डन एंड देन देयर इज़ नो यू नो रिजल्ट. हमने नहीं किया है वो सब कुछ, तो अभी हम कर सकते हैं. और जहाँ तक कंटेंट क्रिएशन की ताल्लुक़ है, तो वो भी उनसे एक तरह से डिमांड ड्रिवन होना चाहिए. मैं दो आपको सिर्फ मिसालें दूँगी. हम लोग घारो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे. वहाँ हमने सोलराइजेशन ऑफ अ विलेज की थी, बिकॉज यू नो ये बिजली की वजह से तरक्की का एक निशान है, और सन अप टू सन डाउन, जो लोग की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है सन डाउन पे, वो अब कुछ और भी कर सकेंगे. वो सारी औरतें मेरे गिर्द बैठी हुई थी एंड दे सेड कि हमें वो गैस दो यहाँ पे. अब जाहिर है गैस कोई एनजीओ नहीं दे सकती है, ठीक है. सोलराइजेशन तो आपके मिनी ग्रिड है, आपने ऑफ ग्रिड वहाँ पे सोलर लगवा दिया, तो क्यों गैस के लिए वो क्यों कर रही थी? बिकॉज सदियों से उनकी ज़िंदगी का जो साइकिल है, वो सन अप टू सन डाउन में अपने सारे काम करने के आदी हैं. वो सब कुछ हो चुका होता है उनका सब काम. हम उन्हें कोई एक्स्ट्रा काम में लगाना चाहते हैं, जिस वजह से हम सोलराइजेशन देते हैं. देयर आर अदर बेनिफिट्स, आई एम नॉट बीइंग फैसिशियस ओवर हियर, बट उनको गैस क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो जो औरत है, वो सुबह सबसे पहले उठ के कुल्हाड़ी लेके पहले झाड़ियों को काटती है, लकड़ी लेके आती है, चूल्हा जलाती है, अपने फेफड़ों के अंदर वो सारा वो जहर जो है इनहेल करती है, अपनी आंखें ख़राब करती है, और उसके बाद वो लोगों को, अपने सारे घर वालों को नाश्ता दे के, और उसके बाद आगे जाती है. उसके लिए गैस की ज़्यादा वैल्यू है. एंड
in one village, WWF का वहाँ पे कुछ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का काम था, somewhere in Salt Range. तो उस गांव में इन्होंने बायोगैस के बारे में उनको सिखाया, क्योंकि माल मवेशी तकरीबन सब लोगों के पास होता है, ठीक है ना. हम लोग गुर्बत और अमारत को किसी और उसमें तराजू में तोलते हैं, लेकिन जिस आदमी के पास एक रिवर है या उसके पास 2-4 गाय भैंसें हैं, प्रॉब्ली ही हैज़ मोर वर्थ और शी हैज़ मोर वर्थ देन व्हाट्स इन माई बैंक. सो उनके उस माल मवेशी से बायोगैस था. एंड व्हाट दैट वुमन वाज शोइंग अस, मेरा किचन आके देखो, मेरा किचन कितना चमक रहा है, मैंने इस पर चूना किया है, अब मेरा आधा दिन पकाने के पतीलियों को मांजने के में नहीं जाता. These are very small intangible things. लेकिन डिमांड ड्रिवन आप पहले जाके उनसे पूछें कि आपकी नीड क्या है, और फिर उस नीड के मुताबिक आप अगर सॉल्यूशंस दें. तो ये जो हम बात कर रहे हैं लर्निंग्स की और वो बहुत फैंसी किस्म की, इट्स सिंपल, इट कैन बी सिंप्लीफाइड. अनदर एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हम लोग पाइपलाइन ट्रेल, आप में से अगर कोई भी गया है, डूंगा गली में है, वहाँ पे WWF वालों ही के साथ गए थे. सो उनकी एक वहाँ की कोई मुश्किल से 5वीं जमात उसने पढ़ी होगी, और वो वहीं की लोकल औरत थी जो कि उनके साथ कम्युनिटी मोबिलाइज़र के तौर पे काम कर रही थी. और हम वॉक करके जा रहे थे, चलते चलते, अगर आपके पेट में दर्द हो ना तो ये वाले इसके पत्ते डाल के आप इसको कहवा पी लें. अगर आपको यहाँ कोई चीज़ काटती है तो वो फलां के पत्ते. दैट लेडी WWF की हेल्प से, शी इज़ अ पब्लिश्ड ऑथर ऑफ एन बॉटनी बुक ऑफ दैट इंटायर एरिया. इसी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पे आए थे, IUCN का प्रोग्राम था, उसमें हमदर्द यूनिवर्सिटी पे उनको लेके गए. वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, और हमदर्द यूनिवर्सिटी में उन्होंने ट्रेनिंग ली कि हमारे यहाँ जो लोकल जड़ी बूटियाँ हैं हमारे जंगलों में, उससे क्या दवाएँ बन सकती हैं. सो आई मीन देयर इज़ सो मच दैट कैन बी डन, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी नहीं चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है. आजकल IUCN की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है कोस्टल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पब्लिक सेक्टर स्कूल टीचर्स के लिए. सो वो स्कूल टीचर्स भी आप देखें ना, हमारे यहाँ जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं आधार, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हमारे बच्चों के पास कितने मौके हैं, फील्ड ट्रिप पे कितने बच्चे जाते हैं, उनके पास कौन से रिसोर्सेज हैं. हमारे पास तो ज़्यादा 1 रूम स्कूल्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्लासेस फंक्शन कर रहे हैं, 1 टीचर टीचिंग सेवरल क्लासेस एट द सेम टाइम, मल्टीग्रेड स्कूल जिनको हम कहते हैं. तो उसके होते हुए आप कितने क्या वो आउटकम्स को एक्सपेक्ट करेंगे. जो हम कहते हैं जी लर्निंग आउटकम्स नहीं है, इतने साल पढ़ाया हमने, उसके बावजूद किसी को लिखना नहीं आता, किसी को वो न्यूमेरिकल स्किल्स नहीं है. न्यूमरेसी की स्किल्स और लर्निंग की स्किल्स जो हैं उसके ऊपर एक हद तक आप फोकस करें. लेकिन ये जो आपके ऊपर एक द डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगेन डोंट लुक एट इट एज अ बॉक्स जिसके अंदर से वो आपने खोला और निकाला और क्लाइमेट चेंज के मुतालिक बता दिया. आपकी बहुत अच्छी आपने जो बात की कि जस्टिस इन एक्विटी को आप किस तरह से इसमें एम्बेड करेंगे साइंस के अंदर, वो नहीं कर सकते, वो बातचीत में होता है. सो सम ट्रेनिंग विच आई गिव, स्पोर्ट्स टीचर हैड आस्क्ड मी कि ये मुझे क्यों बुलाया, मेरा क्या काम है. शी इज़ नॉट हियर राइट नाउ. निगार नज़र, पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल कार्टूनिस्ट, उन्होंने एक स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम बनाया हुआ है. स्नेक्स एंड लैडर्स के गेम में वो आपकी पेडागोजिकल स्किल्स इस तरह से कि आपने उसमें एक गमला दिखा दिया, कोई बिल्ली दिखा दी, बच्चे ने गमला उठा के सीधा कर दिया तो वो लैडर से ऊपर चला गया, मैनी स्क्वायर्स. उसने अगर बिल्ली या कुत्ते को लात मारी या दुम खींची, जो कि हमारे यहाँ करते हैं, तो वो स्नेक ने उसको निकल लिया, वो नीचे आ गया. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग दिस. मदिहा सिटिंग ओवर हियर, उनके साथ उन्होंने जिस तरह के काम किए, दे मेक कार्टून्स. नाउ आई थिंक यू आर इनटू एनिमेशंस. पहले सिंपल बच्चों से कार्टून खुद भी ड्रॉ करके दिखाते थे और उनसे भी ड्रॉ करवाते थे, जिसमें आपकी ये स्किल्स कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम खुद कैसे सॉल्व कर सकते हैं. योर रेगुलर करिकुलम डज नॉट अलाउ दैट काइंड ऑफ थिंकिंग टू इमर्ज. क्रिटिकल थिंकिंग कर्ब की जाती है, डिस्करेज की जाती है, बल्कि कंडेम की जाती है. यू आर जस्ट सपोज टू गो लिसन एंड कम बैक. सो दिस इज़ वाई इट्स डिफ़िकल्ट हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर इन चीज़ों को एड्रेस करना, और इसी के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. Thank you. So let's get another 3 questions. If you can quickly pass the mic around. Thank you so much. Is this audible? Okay. My name is Shanyal and I work. Can you hear me? Okay. My name is Shanyal and I work with Frankfurt Conservation Organization.
of wildlife. And Danish Saab said a lot of good things about conservation of wildlife over here, and I think that Pakistan has a huge amount of biodiversity and is very rich and all of these things. And of course, climate change is, in my opinion, directly also related to wildlife conservation as well. And I just want to know, how are we doing with educating the children around wildlife conservation generally? Thank you. Yeah, and then there's another question. जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नॉलेज और एक्शन गैप है, इसको ब्रिज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप SDGs के 17 गोल्स को देखें तो उसकी जितनी भी ब्रांडिंग है वो नॉलेज सेंट्रिक है, एक्शन सेंट्रिक बहुत कम है. तो हाउ कैन वी, या आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस नॉलेज और एक्शन के गैप को ब्रिज किया जाए बाय बेटर ब्रांडिंग ऑफ द क्लाइमेट एक्शंस? Thank you. And is there a specific panelist you want to ask? ये मैम आफिया इज द आइकॉन, इन अगर ये जवाब दे दें. Let's take one. यहाँ आगे. Assalamualaikum, my name is Angel Imdad and I run a waste management company, and we are very much involved in educating schools and institutions regarding climate education as well. So as it's amazing talk, and as Mr. Danish also mentioned that indigenous problem needs indigenous solutions. And जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि waste की या कुछ, तो हब में बहुत सारी ऐसी communities हैं जो अपनी energy को पूरा करने के लिए plastics जलाती हैं, तो उसकी वजह से कितनी emissions हो रही हैं. But उसके बारे में ना मैं बात करते हुए थोड़ा सा एजुकेशन की अगर आप बात करूं, सो OpenAI इज़ द न्यू थिंग, राइट? एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट एजुकेशन. बट अगर इसके ऊपर हम अभी ट्रम्प ने भी जो है वो 500 बिलियन जो है इसके ऊपर दे दिए हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड एवरीबडी, हम अभी भी ChatGPT खोल के सब कुछ अपने काम कर रहे होते हैं. बट द न्यूअर जनरेशन विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स दिस फैक्ट, दिस न्यूअर थिंग, सो व्हाट इज़ एट व्हाट कॉस्ट? Because at the back end, the data and everything is using a lot of energy. So वो energy कहाँ से आ रही है? And if the students are being prepared for that too, या वो ethical एक चीज़ add up होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? Dr. Osama, I think you can share about that. मैं आपका सवाल का जवाब पहले देता हूँ. देखिए, ये जो थर पे भी हमने फॉर इंस्टेंस काम किया था, या हमने इन द पास्ट एक कोस्टल मरीन टर्टल कंजर्वेशन पे भी काम किया. जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उस पर जो भी हमारी वर्क बुक्स होती हैं उसमें वी आइडेंटिफाई दोस, और फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए वहाँ के बच्चों को उन स्कूलों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं उसकी. अच्छा, नॉट टू से कि उनको नहीं पता, उनका ऐसा नहीं है, दे नो इट, बट देन वी डिटेल इट आउट फॉर देम. हमने अभी रिसेंटली, इट शुड बी इंफॉर्मेशन टू द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो, थरपारकर, पूरे थरपारकर का पहला कॉम्प्रिहेंसिव फौना एंड फ्लोरा इकोलॉजिकल सर्वे किया है, एंड द बुक्स आर अवेलेबल. इसमें हमने वो सारी स्पीशीज़ जितनी हो सकती हैं आइडेंटिफाई की हैं. इट्स बिन अ स्टडी स्पैनिंग 3 years नाउ, और वो प्रिंट भी हो चुकी है. उसमें आपको थरपारकर की कितना रिच है वो बायोडाइवर्सिटी में, वो आपको पता चलता है. सो सच इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स ये ऑनलाइन तो हैं ही, इसमें से आप बहुत कुछ कल करके यू कैन यूज़ इट इन डिफरेंट वर्क बुक्स. ठीक है, उसको टेलर मेड कर सकते हैं जिस ऑडियंस को आप वो देना चाह रहे हैं. अगर हम थरपारकर में बात करते हैं तो उसमें टीचर एजुकेशन भी हमने की, स्टूडेंट्स के साथ भी किया, बट उनकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज पे ही करना है आपको, और उनके लोकल नाम भी होते हैं उन स्पीशीज़ के. तो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट. And we are always, IUCN is always open to suggestions, any recommendations, because we are not just IUCN, it's the oldest environmental organization in the world, but we also have our commission members. AFIA is a commission member in 2 or 3 of our commissions. So, people are most welcome to join hands, and, we have a lot of information worldwide that can be put to use in Pakistan. और हम यही कहते हैं कि आप आके जो what we can do for you, let us know. बट हाँ, एक बात है, ज़्यादातर हमारे इनिशिएटिव फंडिंग बेस्ड हैं, तो बहुत दफ़ा हम नहीं कर पाते सिर्फ हमारे पास फंडिंग नहीं होती. दैट्स द ओनली लिमिटेशन. थैंक यू. I wanted to answer the one question which came from, I think, the back of the seats, कि knowledge में और knowledge है, awareness है, but actions नहीं है.
One thing which I think this is where the education comes in. Unfortunately, like अभी इस रूम में more than 50 people are sitting. कितने लोग हैं जो अपना कचरा segregated फेंकते होंगे? Yes, you are exceptional, ma'am. कितने लोग? Okay, one hand out of 3 people in this room out of 4 and 5. 5 people out of 50 are the only ones they are segregating the waste. हम सबको पता है कि प्लास्टिक इज़ नॉट, कार्डबोर्ड अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट डू दैट. क्यों? क्योंकि हम एक लेवल पे, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब हमारी प्रैक्टिसेस इतनी पुख्ता हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं. सो दिस इज़ वाई वो जो SDGs के 17 गोल्स हैं वो अवेयरनेस पे इसलिए फोकस्ड हैं कि जब बच्चे उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, तो ये वाली जो जनरेशन है वो फिर अपने पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगी, अपनी फ्रेंड्स को भी इन्फ्लुएंस करेगी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगी, और उनके जो भी इनिशिएटिव्स उनके साथ लिए जा रहे हैं. अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज दैट कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द एक्शन. तो एजुकेशन सेक्टर में यही हो रहा है कि हम कोशिश करते हैं प्लेफुली बच्चों के साथ ऐसी गेम्स डेवलप करें, ऐसे उनके कॉम्पिटिशन्स. फॉर एग्जांपल स्पेलाथॉन हमारा एक बहुत एक क्लासिक कॉम्पिटिशन होता है. उसमें हम बच्चों को, हम उनकी स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं करवा रहे होते. बेसिक जो हम उसमें टारगेट होता है हमारा, जो बुकलेट है, जिस बुकलेट से वो स्पेलिंग कॉम्पिटिशन होगा, वो पूरा बुकलेट एनवायरनमेंट के ऊपर होता है. एंड द चाइल्ड हैज़ टू रीड इट, और उसके बाद वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, और ये वो मतलब इट्स लाइक इनडायरेक्ट लर्निंग हो रही है. दिस इज़ वाई अवेयरनेस इज़ द की. अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो एक्शन तो फिर आ ही नहीं सकता है ना. वी आर ऑल दीज SDGs, अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, वो एक्शन बेस्ड भी हैं. उसमें ये भी डिफाइन है कि वाई यू नीड दैट. येस, आफिया, यू वांट टू ऐड टू इट? देखिए, आपने जो कहा ना कि ये खाली एडवोकेसी है और एक्शन नहीं है, हम लोग एक तो थोड़ा सा हमारी नज़र इसलिए हट जाती है कि हम SDG कहते हैं. अगर हम पूरा उसको बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो तब वो जहन के अंदर वो फोकस आ जाता है कि सस्टेनेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आपने कोल्ड टर्की सब कुछ छोड़ दिया. आपने उतना, क्योंकि ज़ाहिर है नौ इंसानी है, उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लेकिन वो इस हद तक हो कि अगली नस्ल के लिए भी बचे. SDGs के जो गोल्स हैं, जो गोल 1 है एंडिंग पॉवर्टी, वो जब तक आप गोल 17 तक नहीं जाते ऑल अक्रॉस, आप गोल 1 तक नहीं पहुंच पाएंगे. बिकॉज गोल 17 कॉल्स फॉर कोलैबोरेटिव वर्क एक्शन. अच्छा, उसमें से सिर्फ गोल 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहा है, जबकि उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों का भी क्लाइमेट से ताल्लुक़ है. आपका लाइफ अंडर सी, लाइफ ऑन लैंड, आपकी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वाटर, आपकी क्लीन हेल्थ, सिटीज़, सारी चीज़ें, जस्टिस उसके अंदर एक की एलिमेंट है. सो वी कैन नॉट लुक एट दैट ग्राफ जिसका है कि वो एक चीज़ है. वो सारे जितने भी उसमें वो बॉक्सेस हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. और इसी तरीके से ये जो करिकुलम है, मैंने देखा है इन्होंने हर टॉपिक, हर जो लेसन प्लान है उसमें बताया है कि ये किस SDG को एड्रेस कर रहा है. बट अगेन आई नो कि SDG कहने से वो वो बन जाता है एक्रोनिम, और आपका उसका असल जो मकसद है वो आपके जहन से महव हो जाता है. तो एक तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. ब्रिजिंग दैट गैप बिटवीन दी एडवोकेसी एंड एक्शन. ओनली एडवोकेसी विल लीड यू टू दैट एक्शन. जब आपको पता ही नहीं होगा, जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप एक्शन जो हैं, जो हम देखते हैं एड हॉक बेसिस पे, अभी भी हम देखते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं. और आप न्यू टेक हमें कहाँ लेके जाएगी वो बताइए, जो एंजल ने पूछा. आप जैसे फरमा रही थी कि आपने कभी पाकिस्तान में सुना नहीं किसी ने कहा हो कि मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता इसका आंसर. आई थिंक अभी तक तो जो हमने अभी हम AI के हनीमून पीरियड में हैं, तो हमें किसी किस्म का एक्सपेंस बुरा नहीं लग रहा. लेकिन आई थिंक इंक्रीजिंगली पीपल आर रियलाइजिंग, एंड द वॉल स्ट्रीट इज रियलाइजिंग कि जितनी वैल्यू खर्च हो रही है उतनी क्रिएट नहीं हो रही. एंड वैल्यूएशंस ऑफ कंपनीज आर गोइंग डाउन, एंड विद दिस डीप सीक बिजनेस, you saw Nvidia losing $500 billion and Google just lost $200 billion yesterday. So I think ये value correction होगी. I think ultimately AI will be used for things that create more value. Obviously a search on ChatGPT costs 10 times more energy than a search on Google. But what is the value of that?
why does everybody need to actually do a search on ChatGPT? I think the cost should reflect that additional amount of energy used. Having said that, obviously, more and more usage of energy is not going to solve the problem, right? मुझे लगता है कि AI से ज़्यादा बड़ा ख़तरा जो है दुनिया को वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से है, because of all that he has announced he intends to do. So AI तो अपने आप का कोर्स करेक्शन कर लेगी, शायद बिजनेस उसका कोर्स करेक्शन खुद ही कर ले, लेकिन ट्रम्प कितने अरसे तक रहेगा और उसके फॉलोअर्स कितने अरसे तक कितनी डैमेज वो कर देंगे जो कि irreversible है. I think that's a much bigger challenge for us. So thank you all so. Achha, there's one last question Sir's been asking. If we can quickly hear him out. Basically, the next session starts in 5 minutes. If you can wrap it up before then, that would be great. Sir, I'm so sorry. If you could come and speak to us after the session, we'd love to speak to you. But please join me in thanking our panelists for this incredible session, and they are available to speak to you about this after. Thank you. That has been a very well versed session. Thank you all for your time. Din